सैयद शुहदा, आइए मिल के दुआ करें कि आप सबका इस सफ़े अज़ा पे आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में अजीम इबादत शुमार फरमाए। दुनिया के जिस कोने में भी ज़िक्र सैयद शुहदा हो रहा है, अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन व मोमिनात की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू को महफूज फरमाए। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर का साया हम पे सदा कायम दायम रहे। मजलिस का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सैयद हादी से कि वो मिंबर पे आएँ और तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल करें। अब बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। Salawat. Today I'll be reciting 4 verses of Surah Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس ومن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. These are on a right course from their Lord, and these is that shall be successful. Surely those who disbelieve it being alike to them whether you warn them or do not warn them will not believe. Allah has set a seal upon their hearts and upon their hearing, and there is a covering over their eyes, and there is a great punishment for them. And there are some people who say, we believe in Allah in the last day, and they are not at all a believer. Salawat. बारी दीगर सलावात। अब मैं दावत देता हूँ ब्रदर इमरान से कि वो मिंबर पे आएँ और सलाम का नजराना पेश करें। अब बुलंदतर सलावात पढ़ दीजिएगा। बारी दीगर सलावात। सलावात। बीबी आदि मैं ए नहीं आदि ना वन कूफे पर या मिन्नत कनीज ते लावें मेरे बालां दा सन छोटा है वले जल्दी देर न लावें। बीबी आदि मेरा छोटा पुत्र है रात को डरदा इको अपने कोल समावें प्यू इब्राहिम दा याद रखें मैं को ईद ते पुत्र मिलावें। टुर गया जनाबे मुस्लिम अपनी जोड़ी को नाल लेके कूफे पहुंचाए। कूफे वाले लोग जनाबे मुस्लिम दी बैयत तोड़ना शुरू की थी। एक और टाइम आया है कि जाए वेले जनाबे मुस्लिम अपनी जोड़ी दे नाल कल्ले कूफे दियां गलियां च रह गए। एक तवा नामी औरत दे घर ते दर ते जनाबे मुस्लिम अपनी जोड़ी दे नाल वन खड़न। जनाबे तवा अपने घर दा दरवाजा खोला है, डिठा एक मुसाफिर अपने 2 बच्चों दे नाल खड़ा है। तवा दी आवाज आई है मुसाफिरा
तेरा घर कोई नहीं। मुस्लिम आदे मेरा घर होया मैं इसे ले रात दे तेरे बूहे ते न खड़ोवा। तवा दी आवाज पे आंदी है मैं भूल दिया या हुसैन दा वकील है। मुस्लिम आदे मैं हुसैन दा वकील हाँ। जनाबे तवा गए हाँ हुसैन दा वकील है। अंदर लांगा मैं तेरी नौकर हाँ। ये घर तेरा है। तफसील दा टाइम नहीं बस इतना पढ़दा। जनाबे मुस्लिम को पकड़ लिया ने इब्ने ज़ियाद दे दरबार च ले आए। इब्ने ज़ियाद पे आदे सर झुका के मैं को अमीर सद के सलाम कर। मुस्लिम दी आवाज है ये मैं तेरे ते ही लानत करे ना जाए तैको अमीर बनाए उन्दे ते ही लानत करे ना। मुस्लिम आदे मेरा हिको अमीर है ज़ैनब दा वीर है। हो गया मुस्लिम जनाब मुस्लिम दा सर स्तन तू जुदा कर गई ना कूफे दे मेन गेट ते लटकाया। 12 मुहर्रम दी दीगर को जदा जनाबे ज़ैनब दा काफला उठाऊं आ गुजरा पईए मुस्लिम दी निगाह अखां खुल गई हैं ते जनाबे सजाद आले पासे मुंह करके मुस्लिम आखे क्यों घिन आए ज़ैनब दरबार दे विच मैकू दस तू दीन दा हादी मुक नसल वेंदी आज सैदां दी ए विच बाजार न आंदी। सलावत। अब मैं दावत देता हूँ हमारे काबिल एहतराम शेख नबील अहमद अवान से कि वो मेंबर पे आएँ और इंग्लिश में फ़ज़ाइल मसाब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अली अल-अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हम्द मिफ्ताहन लिज़िक्रिह व सबबन लिलमज़ीद मिन फ़ज़लिह व दलीलन अला आलाइहि व अज़मतिह। ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما أولهم أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد, for the happiness of Hazrat Zahra Marziyah, for the enlightenment of the graves of the Marhumin, of the graves of the Shuhada, Ulama and Siddiqeen, for the safety of the followers of Ahlulbayt around the world, and for the safety and the hastening of the reappearance of Hazrat Baqiyatullah al-A'zam Arwahun al-Fida, please recite your loudest salawats. These majalis that you are all in attendance of, in reality, I was saying last night in Birmingham that they are
an opportunity for you, an opportunity to raise yourselves, to take yourself from just where you are to the heights of ubudiyya, to the heights of spiritual ascension. Because through Imam al-Hussein and through the way of Imam al-Hussein, an individual can raise themselves. And opportunities, Imam Ali alayhi salam says, opportunities are like clouds. وَالْفُرَصَةُ تَمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Opportunities are like clouds. Grab hold of them before those opportunities pass you by. These majalis that we attend and this remembrance of Imam al-Hussein alayhi salam is part of that opportunity that Allah has given us. Every year, the holy month of Muharram brings a specific rizq, a specific sustenance from Allah. And each year it is different, and what we can gain from it is different. There are many people in Karbala that had an opportunity, but they turned it down. They had an opportunity to ascend and become individuals that would forever be remembered, or they would be individuals that will forever be cursed. One such individual is Ubaydullah Hurr-e-Ju'fi. Ubaydullah Hurr-e-Ju'fi is an individual that stood against Amir al-Mu'mineen, stood against Imam al-Hassan as well. When Imam al-Hussein is reaching just the outskirts of Medina, outskirts of Karbala, he comes across Ubaydullah Hurr-e-Ju'fi. And Imam goes towards him. Says, Ubaydullah Hurr-e-Ju'fi, I know that you did not support my father. You fought against my father in Siffin. I know that you were not in support of my brother Hassan. But O Ubaydullah, I give you an opportunity. Come join me and I will guarantee that my grandfather Rasulullah will do your shafa'ah on the day of judgment. Ubaydullah Hurr-e-Ju'fi, hearing this offer of the Imam, says to him, Ya ibn Rasulullah, I know that you are on truth. I know that you are on the haqq. But I can offer you my horse and I can offer you my sword. Imam says to him, I don't want your horse or your sword. I want you to come. Says, in regards to myself, I can't come. The opportunity is presented to him, but he doesn't accept the opportunity. So then what happens is, after the day of Ashura, he's seen walking amongst the dead bodies, reciting poetry to himself, saying, Oh Ubaydullah, as long as you are alive, know that you turned down the opportunity when the son of Zahra came to ask you for help. You did not go and help him. And then after that, he goes and he joins Mukhtar. And then he has a falling out with Mukhtar, so he goes and joins Mus'ab ibn Zubayr. And then he falls out with Mus'ab ibn Zubayr, and so he forms his own little army. But now Mus'ab ibn Zubayr and these guys are all coming to kill him. He realizes there's no escape. He jumps in the Furat, drowns himself, commits suicide and dies. Look at where he could have been when the opportunity was presented to him. But he chose to let that opportunity pass by. And look where he ended up. And so this is why Imam Ali says, وَالْفُرَصَةُ تَمَرُّ مَرَّ صَحَابٍ, that opportunities are like clouds. Grab hold of them before they pass you by. These majalis are opportunities. Every single moment that you sit in this majlis is an opportunity. Is an opportunity from Allah. You can choose to sit through, come late and sit through 15 minutes. Or you can choose to come from the start and sit and talk to the person next to you. Or you can choose to sit in this
majlis and ask Allah subhanahu wa ta'ala for your hajat and ask Him for the things that you want, and He can grant them to you. Everyone has been given that opportunity, but everyone utilizes that opportunity in a different way. We need to ask ourselves, with 3 or 4 nights already having passed of this first 10 nights, how much of this opportunity have I utilized? What have I changed in my life that makes me closer to Imam al-Hussein? What in my behavior have I changed that makes me reflect more what Imam al-Hussein wanted from me? It is an opportunity. And so, realizing this opportunity, we've taken a topic that is applicable to all of us, and that is the topic of creating tranquility within ourselves. When there is all of this turmoil around us, how is it that we can create that peace that was displayed by those in Karbala in the face of 3 days of thirst, extreme heat, all of that oppression? Not one single complaint comes from any one of those individuals. How is it that I can create that tranquility within myself? And so far, we've given you 6 methods or 6 stages to creating that tranquility. The first is understand that trials in your life are not all bad. Trials come as a refinement of your character. The second thing is understand that this world that has been created is run by your friend. Your friend being Allah. Allah wants nothing bad for you. Allah only wants the best for you. The third thing is to know that that friend of yours, His mercy encompasses everything, and His mercy is overpowering His anger. The fourth stage, we said, was that you need to internalize that mercy and become a conduit of that mercy. Take the mercy of God and then bestow the mercy upon other people. Irhamu turhamu. You show mercy to people and God will be merciful towards you. The fifth is to have a good opinion of Allah subhanahu wa ta'ala. And sixth, we said, don't have a bad opinion of Allah. The seventh thing that I want to talk about today is hold on to the tool of dua. Dua, it brings tranquility in your life. Supplication, praying towards Allah subhanahu wa ta'ala. It is shifa'a, it is a cure for both your body and your soul. It is a cure for your body and soul. If I could ask those brothers that are sitting by the door, the younger brothers, if you guys move there, then it will be easier for people to walk in. Mehdi, you as well. All the way across. If you guys come across, yeah, there we go. All the way, everyone come across. Then it will be easier for people who are coming afterwards for them to come in. So dua is that thing that brings tranquility to the body and the soul. Ayatollah Bahjat Marhum would say that Mufatih al-Jinan of Sheikh Abbas Qummi is a pharmacy. There is a cure for everything in there, for your body and for your soul. But like with medication, we may not understand the interactions of a particular drug upon our body at a cellular level. All I know is the doctor said, I have to take this medication. I don't care about what the biological interactions are. All I know is the doctor knows what he's talking about. I will take this medication constantly over a course of 7 or 8 days, and it will get rid of whatever issue that I have. I don't understand, but I trust the process. Dua is the same. Sometimes you ask for something and you're not given it straight away. Because like that medication, that divine grace must build up in your body slowly until you're ready
to receive that which you're asking for. Sometimes you have to bask in the divine grace, in the divine rays. You look at people that have, for example, a vitamin D deficiency. They say, go sit in the sun. Sun rays will help you with that vitamin D deficiency. Dua is the way that you sit under the rays of the sun, and you're utilizing those rays of the sun and helping your body create or fulfill that deficiency. Dua is the same. It is like that sun that you are sitting under, but it is the sun of the divine characteristics of God that is shining upon you and is building within yourself that vitamin, whatever you want to call it, the vitamin God, as it were, to be able to receive the divine grace. At times, medications are taken at a level. You start at a higher level or a lower level, and then it's slowly increased until you get rid of an illness. The same with dua. You benefit from those divine rays every time you do a dua, because we in our essence are deficient because of years of separation from the source of our origin, from the source of the divine light from which we emanated. We have become deficient after we entered the realms of multiplicity, the various realms of Alam-e-Mithaq and Alam-e-Dhar, and all of those realms. We were closer to the divine light. But as time has gone and we've passed through the realms of existence and entered into the realms of multiplicity, i.e. this realm, the realm of the mulk, we've become deficient in that connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala, or the narration says, Ya ibadallah, O servants of God, antum kal marada, you are like ill people. You are like people with a disease. وَرَبُّ الْعَالَمِينَ كَالتَّبِيبِ, but the Lord of the world is like the doctor. You are ill, and the Lord of the world is your doctor. You are deficient in something because you have separated yourself from the divine grace. Even in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, He addresses mankind. He says, Ya ayyuhal insan, antumul fuqara'u ila Allah. That you are faqir, you are poor in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghaniyul hamid. And surely Allah is ghani. Allah is wealthy. You are in your very nature deficient. But in order to fill up that deficiency, what you need is a way to bring the divine light and the divine grace within you. In the same way that you sit under the sun to increase the levels of your vitamin D, you need to sit under the rays of dua in order to increase in the levels of your grace of Allah subhanahu wa ta'ala within your body. There are two types of rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, we say that Allah's mercy is vast. وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. And by your mercy that encompasses everything. But His mercy is of two types. There is a khas mercy, there is a specific mercy, and there is a general mercy. The general mercy is what you see everywhere. That is that the trees are growing, the human beings are breathing, the hearts are beating, all of this thing. This is all part of the general mercy. You know, animals, kuffar, jinn, everything comes under that general mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. But then there is a specific mercy. You know, Allah subhanahu wa ta'ala in His general mercy, He provides to the human being who in his very nature is deficient. So he gives him the basics for his existence. He knows that I've given him a body. He requires food. And so He provides that.
out of His absolute mercy. You know, this general mercy encompasses everything. In the Dua of Rajab, what do we say? يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تعننا منه ورحمة. Says, oh, the one that gives to the one that asks from him, and oh, the one that gives to the one that does not ask from him, and oh, the one that gives to the one that does not even acknowledge his existence, تعننا منه ورحمة, out of His absolute mercy. So He provides to everything and everyone out of His mercy. Even hell, I said, is His mercy. In Surah Rahman, if you remember a couple of days ago, I said, look at how Surah Rahman introduces hell. It says, this is the hellfire, this is all of what the punishment, this is what they will be fed in hell. And then straight away it says, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, which of your Lord's bounties will you deny? The fact that you can feel, the fact that you can hear, the fact that you can cry out, the fact that you can eat, even though it may be pus-filled, thorned fruit. But the fact that you can still eat is still a mercy of God. And the fact that that burning is refining you and purifying you to be able to enter into heaven. Thus, hell also becomes a mercy of God. But that's His general mercy. There is a very specific mercy that He bestows upon His ibad. That specific mercy can only reach you if you fulfill one simple criterion. And that is that you acknowledge that you are nothing. You realize that you are nothing. And that in reality is the ultimate aim of the human being. To realize their nothingness. To understand that whatever they have is nothing. We explained it last night in the lecture in Birmingham about how the divine names manifest and how you utilize the divine names for the things that you do. The fact that you see is only because you're drawing from Him being Basir. The fact that you hear is only because you're drawing from His characteristic of Samir. You have nothing of yourself. Though you may think yourself to be powerful, but the power only comes because you draw from Him being Qawi. And when you draw from that divine source of knowledge, then there is no limit to your power. There is no limit to your power. You can excel in being able to draw from that power, such to the point that even lifting the doors of Khaybar on one hand becomes easy for you. Because you're drawing from that power. Otherwise, Ali alayhi salam himself, even having ripped the door of Khaybar from its hinges and holding it in one hand and throwing it aside, he's saying, Mawlaya ya Mawla, Anta al-Qawi wa ana al-Dha'if, wa hal yarhamu al-Dha'if illa al-Qawi. He's acknowledging that even that power that I have is only because Allah gave it to me at that moment. Otherwise, when it comes down to Ali's own power, he can't break a piece of bread with his own hands. Being able to tap into the divine names and harness their energy and their power in this world can only happen when a person truly understands that they are nothing, and everything that they do is that they are harnessing from the divine source. They are utilizing the divine source. There was one of the dervishes, I'm not sure if I gave you this story, like all the lectures are all coming together in a big blur. But inshallah, if I did, you'll forgive me, but there's some new faces, so hopefully they won't realize. But I'm pretty sure I didn't say this here. There was a dervish sitting one day in the marketplace, and the king rides by. And all the other people, the market sellers and the beggars and everyone stands up to attention for the king. And this dervish is sitting there in his own world. And the king walks past and realizes this is the only person in this whole area that didn't stand for me. So he stops, backtracks his horse, says, "You,
Dervish, why didn't you stand for me? He says, who are you? He says, I'm the king. I says, you're the king. So he says, what will you be after you've been the king? And he says, nothing. So he says, well, I'm already nothing. So the point being that when you realize that you are nothing, then you are everything. When you realize that you are nothing, that's when you draw power from everything. Because you realize that all you are a simple conduit towards towards Allah, that harnesses from the divine names and brings forward. And Ali Muhammad are the absolute conduits for that. The realm of wilaya is what separates the realm of Tawheed from the realm of existence. Every phase that comes, every bounty that comes from Allah passes through the realm of wilaya. Ali Muhammad draw it from there, and then from them it is distributed. They take hayat from the name of Hay, and they give it to they give it to Israel to go, or Israfil to go and distribute it. They take death from his name of Mumit, and they give it to Israel, go and take bring death into the mortal realm. They take rizq from his name of Raziq, and they give it to Mikael, go distribute rizq in the dunya. You see, nothing is from them. Recite aloud salawat. You see, nothing is from them. They're drawing from the divine source. And that's why we say in the ad'iyat and the ziyarat that there is no difference between them and you, O my Lord, except that they are your makhluk, except that they are your ibad. They draw from the divine source. Then from the realm of wilaya, they then distribute it out to the rest of existence, and then this silsila, because the whole world is created in a vertical way. So this khas rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala, this specific mercy of God, also comes via the realm of wilaya. In order to be able to tap into the divine specific mercy of God, one can only go through the path of Ali Muhammad. There is no other way of reaching that specific mercy of God. There is no other way of achieving that specific closeness to Allah except that one passes through the realm of wilaya and goes to the wali of Allah. And there's a big discussion nowadays that our own aqaid has been destroyed, where people say, can we ask the Imam direct, or should we ask Allah for the wasila of the Imam? Or should we go directly to the Imam? And people are like, no, go straight to Allah. All of this is shirk. Because they haven't understood our aqaid. What I just said to you, what was shirk in there? I said they have nothing of themselves. They draw from the divine names. If they were left bidhat, they have nothing. They draw from the divine names. Ayatollah Mujtahidi Tehrani says, I asked Marhum Ayatollah Khansari, and Marhum Ayatollah Mujtahidi also passed away, but Ayatollah Khansari is that individual that when Sheikh Murtaza Al-Ha'iri, the son of Sheikh Abdul Karim Al-Ha'iri, the founder of the Hawza in Qum, when they asked him, they said, what do you have to say about Ayatollah Khansari? He says, the only thing I can say, that if ever there was an opening for a 15th ma'soom amongst the 14th, if ever there was an opening and they wanted to check who had the sifat, I would give witness that Ayatollah Khansari has these sifat. One of the grand maraja that all of the other marjas refer back to in terms of his piety, his knowledge. This is an individual that heard, it was his opinion, that if a marja becomes unconscious, his system of wikalat finishes. So all his wakils that are there, they no longer are under his system of wakalat because he has become unconscious to the dunya. So when they said to him that we need to put you under anesthetic and do an operation on you, he refused. He said, just give me a book. I'll read.
And it was a big operation. They said he either gave him a book or he started doing dhikr. And he said, you carry on, do what you want. And he started doing dhikr. And then the doctors, the surgeons are operating on him. And it was like, he's not even there. He's not even this individual. I told him, which day did Tehran? He says, I went to him and I asked him. Said, when I go to Karbala, or when I go to Imam al-Rada, or I go anywhere, can I ask the Imam direct? Or is it better that I ask Allah for the wasila of the Imam? Ayatollah Khansari, he said, both are okay. But the first one is better. Ask Imam direct. Says, this is better for you. So why? Says, ask Imam direct to ask Allah on your behalf. It's the same way. If, for example, you say, Nabeel, I need something from, Brother Amir here, and he's quite close to you. He'll listen to you. And I'll say to you, look, why don't you just go to Brother Amir and say, you've spoken to me and it's fine. That's one way that you can go there. Or I can go to Brother Amir on your behalf. What's going to be the quicker route? Me going to him, because our relationship is stronger than that. And so he says, go and ask them direct. Say, oh Imam, you ask Allah on my behalf. And even further than that, Ayatollah Khansari, Sheikh Murtaza Al-Ha'iri, you look at them, they said even sometimes we wouldn't want to bother the Imams with our requests. Or sometimes I would go and ask Imam al-Rada and not get what I wanted. So instead I'd go to Shah Abdul Azim Hassani. And I would say to him, you ask Imam Rada for me, who then will ask Allah for me. And Allah granted it to me. There is a silsila here. But the problem is our aqidah has been so corrupted by a Salafi type mindset that we've started to move like, oh no, go direct to Allah. No, you can't go direct to Allah. There isn't a way. You must go through the path of wilayah. There is a barrier between makhluk and Allah. And that barrier is called Ahlulbayt and the Holy Prophet. They are the barrier. There is no barrier between them and Allah subhanahu wa ta'ala. The only difference that lies between them and Allah is that they are the creation of Allah. And in their very essence, they must draw. They have nothing from themselves. They draw directly from the source of God. And then from them, they pass it on. This is the reality of our aqa'id. And this is, in the Holy Quran, we have riwayat, we have ahadith about this. Look at the chapter in Bihar of Alam al-Mithaq, 75 such narrations. Ayatollah Alama Majlisi brings in Bihar, in the Bab Tinati wal Mithaq, the chapter of the chapter of the covenant. So when one asks, they want to tap into the khas rahmah of Allah, the specific rahmah of Allah. But in order to do that, one must achieve the level of nothingness. There cannot be anything. And that's why the dua of the muzdar, of the person that has no one, is easily accepted. My Lord, I have no one else to turn to you. This example is bad, but it will give you an idea. Imagine a parent whose child is dying, and the doctors have said, we can't help you. We can't do anything for you. Ask that parent what it means to feel muhtar, to feel helpless and hopeless. That there's no one to turn to. But that's how every time you do dua, that's how you should do it. Because that attracts the divine mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. There's much more and we'll discuss tomorrow because my time is up. But I want to leave you with this. Dua of Imam al-Hussein in Karbala. Because when you are nothing, then what happens? When you realize that you are nothing, then your every hope becomes Allah. It becomes Allah. Your every hope becomes Allah. You don't depend on anything else. Your every hope, your every wish, your every desire goes to the door of Allah subhanahu wa ta'ala. You don't focus on mortal men.
Subh Ashur, after Fajr, Imam al-Hussein came out. Says, the narration says he looked towards the skies and he said, Allahumma anta thiqati fi kulli karam. Says, my Lord, you are the one I depend on in every affliction. Wa anta raja'i fi kulli shiddah. And you are the one that I have hope in every single hardship. وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. And in every difficulty with which I am faced, you are my only remedy and my only resort. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة. Says there have been many times, many embarrassments, many things that I have done that have weakened my heart. And there was no remedy, there was no way of fixing those slip-ups of mine. وَيَخْذُلُ فِيهِ الصَّدِيقُ وَيَشْمَتُ فِيهِ الْعَدُوُّ. And my friends didn't come to help me. And my enemies rejoiced at my misfortune. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك. However, when I stopped seeking their assistance and the assistance of everyone, and I turned only towards you and sought only the remedy for my problems through you, فَفَرَجْتَهُ عَنِّي وَكَشَفْتَهُ وَكَافَيْتَهُ. You provided me solace and relief. You gave me the situation, the solution. You removed that difficulty for me. فأنت ولي كل النعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. And you are the wali, you are the custodian of every blessing and the peak of all desires. This was Subh Ashur, after the time of Fajr. And just around that time, a guest came towards Imam al-Hussein. He called Al-Abbas and Aliun Akbar and said, go, there is a guest of mine that is approaching. Welcome him and bring him to me. Al-Abbas and Ali Akbar go, and there they see Hur coming, blindfolded, hands tied. He comes towards Imam al-Hussein, head lowered, his son by his side. He lowers his head, says, Yabna Rasulillah, I am the reason that you are here. Yabna Rasulillah, I am the reason I am the reason for the fear in the hearts of the daughters of Ali and Zahra. Yabna Rasulillah, halli min tawbah. Says, oh son of Rasulullah, is there any forgiveness for me? They say that at that moment Imam al-Hussein said to him, Irfa' ra'sak ya Hur. Says, Hur, why have you lowered your head? Raise your head, Hur. Says, raise your head. Of course, everything is forgiven. You have come towards us. Then Hur says, Ibn Rasulillah, then if that is the case, then let me be the first to go out and fight. Some narration says that Hur's son went out to fight first. He fought and he fell, he called. Hur wanted to run out towards the battlefield, but Abu Abdullah stopped him, said, Hur, it is very difficult for a father to go to the body of his young son. Hur, you wait, I will go to the body of your son. And Imam al-Hussein went. Hur, lucky, how lucky you were. Imam al-Hussein went to the body of your son. But in a short while, when his Ali falls, Hussein himself will have to go. Sometimes running and falling. Other narrations say he crawled, calling out, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, until he reached the body of his son Ali Akbar. Soon it came for Hur to go. Hur mounted upon his horse and he rode out. He fought bravely, but eventually he called out, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Imam al-Hussein ran to the body of Hur, saw that the head of Hur was bleeding.
Imam sat down by him, said, "Oh Hur, what a beautiful name your mother gave you. For surely you are free in this dunya and in the akhirah." Then the Imam took a handkerchief from his pocket and he tied it to the head of Hur to stop that bleeding, and kept the head of Hur in his lap as the soul of Hur left his body. Hur, your end was at the feet of Abu Abdullah. You gave everything for the sake of Imam al-Hussein. And added to that, Hur, Kareem Hussein came and he bandaged your head. He didn't allow your head to lay on the hot sands of Karbala. He placed your head in his lap. But Hur, come and look at Ashra-e-Ashur. Look at Abu Abdullah. Imam al-Hussein tended to the wound on your head, Hur. But look, just before Asr of Ashura, Hussein sat up upon his horse to take a breather. One mal'oon threw a stone that struck the head of Imam al-Hussein. The blood began pouring down his face. Imam, to wipe away the blood, pulled up his shirt to wipe the blood from his eyes. Harmala, seeing the chest of Imam al-Hussein, fired a three-headed poisoned arrow that hit the chest of Imam al-Hussein with such force that the head of the arrow came out from the back. He turned around and he pulled the arrow from his back. They said a fountain of blood gushed forth from the chest of Hussein. He took the blood in his hands. He threw it towards the heavens. Not a single drop came down, the narrator said. Then again he filled his hands with his blood. He poured it on his face and he said, "I will meet my grandfather and tell him that this individual and that individual killed me." And the horse began running. One struck him. As you landed to the earth of Karbala, Imam al-Hussein placed your head in his lap. He wouldn't allow your head to touch the earth of Karbala. But come and look at Ashur. As Hussein falls from the horse, the Maqtal says, وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى الرَّمْلِ وَالتُّرَابِ. Hussein's head hit the stones and the earth of Karbala. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive the sins of our parents. Ya Allah, those of our parents that are alive, give them long lives. Those of our parents that have left this world, give them a place next to Ali Muhammad in Jannah. Oh Allah, those who are ill, give them shifa'ah. Those who are in debt, clear their debts. Those in education, make them successful. Ya Allah, keep safe the Shia of Ali Muhammad around the world. Ya Allah, give us tawfiq to go on ziyarat of Ahlulbayt this year and every year. Ya Allah, hasten the reappearance of the Imam of our time and allow us to be amongst his true muntadreen, his true waiters, for the acceptance of these du'as and any of the du'as that you brothers and sisters have brought. Please recite three of your loudest salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएं। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं गुजारिश करता हूँ बदर सैयद हिजर से कि वो मेंबर पे आएँ और इमाम की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करें। बुलंद सलवात पढ़ दीजिए।
दुरूद भेजिए बाबा से बुलंद मौलाना आगे। सलाम सलाम के 3 शेर फिर मर्सी के 4 अगर आप याद होगा। सीमा बरबादी के सलाम के 3 शेर। एक दौर सलामी दुनिया का, सदियों में ऐसा आता है। एक दौर सलामी दुनिया का, सदियों में ऐसा आता है। जब कोई पैगंबर उठता है या कोई शहादत पाता है। एक दौर सलामी दुनिया का, ऐ नहर फुरात, ऐ नहर फुरात, अफसोस कर अपनी किस्मत पर। ऐ नहर फुरात, ऐ नहर फुरात, अफसोस कर अपनी किस्मत पर। कौसर का साक़ी आज तेरे साहिल से प्यासा जाता है। एक दौर सलामी दुनिया का, सज्जाद असीरे जौर हुए, अफसोस किसी ने ये न कहा। सज्जाद असीरे जौर हुए, अफसोस किसी ने ये न कहा। ये पाँव सुतूने काबा है, जंजीर किसे पहनाता है। एक दौर सलामी दुनिया का। फातिहा। मर्सी के 4 जब जख्म खा के बिनते अली के पिसर गिरे। जब जख्म खा के बिनते अली के पिसर गिरे। जलती ज़मीं पे तशना जिगर खून में तर गिरे। गुल पड़ गया के खाक पे रश के कमर गिरे।
सुनकर हुसैन कल्बो जिगर थाम कर गिरे, अब्बास दिल पे दागे अलम खा के रह गए। जाफर के फूल दश्त में मुरझा के रह गए। खैमे में तड़पती रही ज़ैनबे हसीन, लाशों पे भांजों के वहाँ पहुँचे शाहिदी। देखा के गश है खाक पर वो दोनों महजबी, बहता है खून बात की ताकत जरा नहीं, ढाल गिरी है छुट के दिलेरों के हाथ से, कब्जे मगर छूटे नहीं शेरों के हाथ से। शान हिला हिला के पुकारे शहे हुदा, मामून सार होश में आओ तो एक जरा, ये कुछ हाल दिल सुनाते हुए जाओ मैं फिदा। ये सुन के दोनों शेरों ने की आँखें नीम, वा देखा रुखे इमाम तो घबरा के रह गए। याद आ गई वो बात के थर्रा के रह गए। आखिरी बात, मौला ने प्यार से कहा, हाय हाय ये क्या लर्ज़ा है जिस्म किसका, तुम्हें डर है मैं फिदा। शह के कदम पकड़ के पुकारे वो महलका, धड़का हमें ये है कहीं अम्मा न हो खफा। ज़हमत हुई इमाम फलक बारगाह को, समझे न वो कि हमने बुलाया है शाह को। ज़हमत हुई इमाम फलक बारगाह को, समझे न वो कि हमने बुलाया है शाह को। नारे सलाम। हमारे दीगर सलवात। ज़ैनब ने कहा बच्चों की लाशों से लिपट कर, ज़ैनब ने कहा बच्चों की लाशों से लिपट कर, क्यों सोते हो कुर्बान हो इस नींद पे मादर।
उठो के करीब आके खड़े हैं अली अकबर, सरताब कदम सारा बदन खून में है तर। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद। मामू है सितमगारों के नरगे में बचाओ, नाना का फिर अंदाज जमाने को दिखाओ। परचम लिए अब्बास हैं तुम मश्क उठाओ, प्यासा है कई रोज से नन्ना अली असगर। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद। ले आए हैं मक्तल में उठाकर तुम्हें मामू, ये खून में डूबे हुए कपड़े तो बदल दूं। दिल अब तो संभलता नहीं सीने में के माँ हूं, बाजू मेरा क्यों थामे हैं अब्बास दिलावर। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ममनीन कराम, कल इंशाअल्लाह यहाँ पे मजलिस अज़ा के बाद शबीए जूला शहज़ादा अली अकबर अली असगर बरामद किया जाएगा। तो आप जो भी आपकी मन्नतें हैं, स्पेशली हमारी बहनें माएँ बहनें जो उनकी मन्नतें होती हैं, उनके लिए एक ये ऐलान है। कल मजलिस अज़ा के अख्ताम पर शबीए जूला शहज़ादा अली असगर बरामद किया जाएगा। तो आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि आप उसमें भरपूर शिरकत करें। बिला किसी तातुल के मैं दावत दूँगा हमारे काबिल एहतराम मौलाना सैयद मिसम ज़ैदी साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और फ़ज़ाइल मसा मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। आप बुलंद तर सलवात पढ़ लीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबिय्यना तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान फत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सलवात भेज दें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अच्छी सोसाइटी बनाने में
जिनका भी इंशाअल्लाह रोल रहेगा, जो भी इस किरदार को अदा करेंगे, वो इंशाअल्लाह परवरदिगार की जानिब से बेहतरीन जज़ा पाने वालों में से हैं। इसलिए कि सारे काम और सारे मुस्तक़बिल और फ्यूचर का दारोमदार है अच्छे माहौल पर। जैसा माहौल बनाइएगा वैसा ही वहाँ से सरमाया सामने आएगा। बिर और तक़वा में मदद करने की दावत दी गई है। बिर और तक़वा ये दो लफ्ज़ हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। दोनों अंदाज से अच्छे की तरफ दावत दी जा रही है। वो आगे इसमें उद्वान की बात अलग है। बिर कहते हैं नेकी अच्छाई करने को, और तक़वा कहते हैं बुराई से बचने को। समझे आप? अच्छाई करना, इसमें मदद करो, बुराई से बचने में मदद करो। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, वहां भी ऐसी ही बात पाई जाती है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी यह है कि बिर और तक़वे में एक दूसरे का साथ दें, और यही पैगाम था, पैगाम अंबिया। हमने तमाम तारीख़ का जब मुताला किया, हर जगह पर अंबिया के बेसत के मकासद में अहम तरीन मकसद यही था कि लोगों के दरमियान कुछ ऐसे काम किए जाएं जिसकी बुनियाद पर माहौल एक अच्छा माहौल बन जाए, सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बन जाए, समाज एक संवरा हुआ समाज बनकर सामने आए। हमने अइम्मे ताहिरीन की तारीख में भी ऐसा ही देखा। मुसल्ला इबादत पर बैठकर यकीनन इबादत करने में अइम्मा से बढ़कर कोई और नहीं था, लेकिन मैदान अमल में आकर के लोगों के दरमियान काम करना और उसके साथ मुसल्ले को संभाले रहना, यह था कमाल। हमारे यहाँ आमतौर ऐसा ही होता है कि अगर हम इधर का जोर पकड़ लेते हैं तो उधर का छोड़ दिया करते हैं, और उधर का पकड़ लेते हैं तो फिर इधर छोड़ दिया करते हैं। हमने जब अंबिया और अइम्मा की तारीख़ का मुताला किया, हत्ता कि हम सुलहा और उलमा की तारीख़ का भी मुताला करते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले एक किताब में एक वाक़या देख रहा था जनाबे बहलोल दाना का। यकीनन कोई ऐसा नहीं है जो उनके नाम से नहीं आशना है। नाम तो सुना होगा ना जवानों, बच्चों। ये बहलोल दाना कौन थे? कौन थे जी? सहाबी थे। किस इमाम के ज़माने के दौर? इमाम जज़ाकल्लाह, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम। कहा जा सकता है कि दौर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाता होगा। बहलोल दाना इन्हें क्यों कहते हैं? इसी के लोग इन्हें कहते थे बहलोल दीवाना। इन्होंने खुद को पागल क्यों शो किया था? पागल शो किया था, ये पागल नहीं थे। ये वही मुआशरा साजी वाला काम था। ये इसी जैसी एक और शख्सियत थी जिसका नाम था जाबिर जोफी, 5वें इमाम के दौर में। उनकी भी सूरत हाल कुछ ऐसी थी। उन्होंने भी हाकिम वक्त की बात नहीं सुनी, इसलिए नहीं सुनी कि इनके कंधे पर रखकर वो बंदूक चलाता। आप जानते हैं सब किया जाता है, कोई ख़ास बात नहीं। दुनिया में सब आम तरीक़े हैं। अच्छे लोगों को पकड़ लिया जाता है, लोगों को जज्ब करने की तरह अपनी तरफ खींचने के लिए, और फिर उनके कंधे पर रख करके। भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने आखिर खिलाफत को क्यों नहीं कबूल किया? जानते थे कि कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जाएगी, यही तो था मामला। खिलाफत नहीं कबूल की, विलायत उसके बाद वली अहद की हैसियत से वो भी नहीं कबूल किया। लेकिन जब ये कहा कि मौत है या ये है, तो वहाँ पर मजबूर होकर के आपने कबूल किया। और उसके साथ क्या शर्त लगा दी? शर्त ये लगा दी कि शर्त ये है कि ना किसी को अज़ल करेंगे, ना नस्ब करेंगे, न किसी को अपॉइंट करेंगे और न किसी को क्या कहते हैं डिसमिस करेंगे, किसी को पोस्ट से हटाएंगे नहीं। ये एक ऐसी शर्त थी। इमाम मासूम थे, खूब अच्छी तरह से समझते थे कि इनकी दुखती रग कहाँ है, कहाँ से मामले को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हर आदमी की बात बस की बात नहीं है। हर आदमी मासूम इमाम नहीं है। हर एक के पास मासूम इमाम जैसा इल्म नहीं है। उलमा के साथ भी ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। बहलोल दाना भी उन्हीं में से एक हैं, जाबिर जोफ़ी भी उन्हीं में से एक हैं। जाबिर जोफ़ी का दौर 5वें इमाम का ज़माना है, और बहलोल दाना का ज़माना 6ठे, 7वें और 8वें इमाम का ज़माना है, जिसमें अहम तरीन दौर 7वें इमाम का दौर है। सहाबी हैं, इमाम के चाहने वाले हैं, अक़ीदतमंद हैं,
अपने दौर के बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं। कभी सुना है आपने ऐसा? बहलौल दाना का तज़किरा आपने खाली सुना होगा कि एक दीवाना इंसान या दीवाना शक्ल इंसान था। नहीं नहीं, अपने दौर के बहुत बड़े फाजिल व आलिम थे बहलौल दाना, वो मामूली शख्सियत नहीं। उनकी अजमत का ये आल था। बहलौल दाना हिशाम के रिश्तेदार थे। हिशाम कौन था उस जमाने का जी? क्या था? जरा डट के बोलिए। खलीफा था, है ना? बादशाह था भाई, सीधी सीधी बात है। खलीफा खलीफा कहाँ चक्कर में आप पड़े, बादशाह था ना। ये अपने दौर का बादशाह है, खलीफा है, जो कुछ भी कह ली, ये उसका रिश्तेदार भी है बहलौल दाना। अब कहते हैं कि कदर गौहर शाह दानत या बेदानत जौहरी, ये बहलौल दाना की कदर को वो बादशाह खूब अच्छी तरह से जानता था। खानदान के थे ना, फैमिली के थे, रिश्तेदार थे, इल्मी शख्सियत से आशना थे। हिशाम की पूरी कोशिश ये थी कि बहलौल दाना को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। अब आपको अंदाजा होगा कि कोई मामूली शख्सियत ना रही होगी। मुल्क का चीफ जस्टिस बनाने के लिए किसी मामूली आदमी को नहीं पेश किया जाता, लेकिन मामला वही था कि कंधे पे रखकर फिर क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। बहलौल दाना, जाहिर सी बात है, यहाँ सूरत हाल ये है कि अली इब्न यकीन को भी जब हुकूमत का दौर मिलता है तो यूं ही नहीं अपनाते हैं, पहले किससे पूछते हैं? नहीं पूछते हैं आपकी इजाज़त है या नहीं, अगर है तो। और जब इमाम ने 2-3 शर्तें लगा दी कि ये शर्तें हैं और इस बात की ये ज़मानत भी है, इमाम ने शर्तें भी लगा ली, गारंटी भी ले ली, और उसके साथ कहा जाओ जाकर के करो। और उसके बाद फिर इमाम ने हिफाजत की, जो आप जानते हैं। लेकिन हर आदमी के साथ एक सिचुएशन, एक हालात नहीं होते हैं। हर दौर के हालात अलग अलग होते हैं। बहलौल दाना का दौर जो था, या जब बहलौल दाना जिन हालात के साथ गुजर रहे थे, उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो चीफ जस्टिस बन करके सामने आए। हिशाम की पूरी कोशिश थी कि इनको क्या बना दिया जाए? काज़ीउल क़ुज़ात बना दिया जाए। पूरा प्रेशर डाला, और जब किसी भी तरीके से बना नहीं सका तो जानते हैं इसके बाद फिर क्या किया? बहलौल दाना बहुत ही ज़ीरक, बहुत तेज़ होशियार आदमी। हिशाम ही का वाक़या है कि बहलौल दाना की ज़िंदगी में हिशाम जाता है हम्माम में। उस ज़माने में हम्माम जो हुआ करते थे, घर आज भी कहीं शायद देखा हो आपने, ईरान इराक़ में बड़े बड़े हम्माम होते हैं, उसमें लोग हम्माम में जाते हैं नहाने के लिए। गर्म पानी का इंतजाम रहता है, एक सिस्टम है पूरा बना हुआ। वो मैं यहाँ उसको तर्जुमान ही नहीं कर सकता, जो देख चुका होगा देख चुका। आज से 20 साल पहले तक आम था वो, अब ख़त्म हो गया। अब तकरीबन घर के अंदर प्राइवेट अपने अपने पर्सनल हम्माम होते हैं। हिशाम जाता है, हम्माम में जाने के बाद सिर्फ एक लुंग पहने हुए, लुंग तो समझ रहे हैं ना, एक लुंगी पहने हुए, और कहता है बहलौल दाना से कि बहलौल, इस वक्त मैं कैसा तुम्हें लग रहा हूँ, मेरी तुम्हारी निगाह में कैसी कदर व कीमत है? तो बहलौल दाना का एक चवन्नी के बराबर। पता नहीं आप इसकी तर्जुमानी कैसे करेंगे, यानी क्वार्टर दिन, ये क्या कहेंगे, पाउंड समझ लीजिए आप बच्चों के लिए। सही कह रहा हूँ ना? 1/4 पाउंड, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी उस ज़माने का जो एक सिक्का रहा होगा उसका 1/4, इससे ज़्यादा कुछ नहीं तुम्हारी कीमत है। तो हिशाम ने कहा बहलौल दाना से कि बहलौल, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये तो मेरी लुंगी की कीमत भी नहीं है। कहा उसी की तो बता रहा हूं, तुम्हारी क्या औकात है? ये औकात को पहचानवाना, जब औकात को पहचानवाया, जब मौका होगा तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में और भी वाक़यात असहाब के हैं, बहुत अहम वाक़यात जो उन्होंने काम किए हैं। और हम लोगों को ये काम खाली ये नहीं कि वाक़या किस्सा सुन लेने वाला, हमें भी काम करने के वास्ते जब हम तय करें, एक जवान की हैसियत से हम तय करें कि मुआशरे में हमें मुआशरा साजी करना है, तो फिर हमें भी इन सब हालात का सामना कर पड़ सकता है। बहलौल दाना को पूरी कोशिश की कि क्या बना दिया जाए? चीफ जस्टिस, काज़ीउल क़ुज़ात। और ये जानते हैं कि ये हमें इस्तेमाल किया जाएगा, लिहाजा हमारे लिए बेहतर नहीं है। इमाम से पूछा होगा, यकीनन इमाम ने मुवाफ़क़त नहीं की। जब इमाम ने मुवाफ़क़त नहीं की तो फिर इस बात है, कबूल होने का कोई सवाल ही नहीं होता। आखिरकार किसी अपने वजीरों से बादशाह ने पूछा कि तुम कोई मशवरा ऐसा दो जिसके नतीजे में बहलौल को कब्जे में किया जा सकता हो। का एक ही तरीका है, वो ये है कि देखिए, गौर से तवज्जो दीजिएगा, हम लोगों के यहाँ सूरत हाल जो हम बहकते हैं, कहाँ से बहकते हैं, कहाँ से हम पटरी से खिसकते हैं, और किस चीज़ में बहुत ज़्यादा ताकत पाई जाती है। और बज़ाहिर अंग्रेज़ी में भी ऐसी कोई ज़रबुल मसल पाई जाती है, अरबी में ऐसा कोई फ़िक्रा पाया जाता है जो इसके ऊपर
बहुत ही सादिक आता है। आपकी खिदमत में वाक़या अर्ज़ करूँगा तो आपको समझ में आएगा। एक मरतबा सलावत भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ा आगे तशरीफ़ लाइए, यहाँ आ जाइए, बहुत जगह है, आगे आइए ताकि पीछे हजरात देख रहे हैं ये मजमा है, वहीं से बाहर बैठ जा रहे हैं। आगे आइए तो इंशाअल्लाह बाद में आने वाले हजरात आगे तशरीफ़ लाएंगे। एक मरतबा और सलावत भेजें। कहते हैं उदनो मिन्नी, और करीब आइए, फिर देखते हैं इंशाअल्लाह आगे की बातें अर्ज करता हूँ। बहलोल दाना के ऊपर प्रेशर डाला गया। किस चीज़ का प्रेशर डाला गया? इस पोस्ट को कबूल करने। बहलोल दाना जानते हैं, मैं मासूम से हिदायत ले चुके हैं, सवाल ही नहीं होता है कि उसमें कोई तब्दीली कर दें, उनको कबूल नहीं करना है। बादशाह ने वजीर से मशवरा किया जो बहुत ही ज़ीरक, तेज, समझदार था कि इनको कब्जे में करने का क्या तरीका है। हर तरह के लोग वजीर पाए जाते हैं मशवरा देने वाले। कोई कहा होगा कि मसलन इनको सज़ा दी जाए और उनके ऊपर पेनाल्टी लगा दी जाए और उनके ऊपर ये सख्ती कर दी जाए और उनको मुख्तलिफ। एक ने कहा नहीं, ये सब चक्कर में न पड़ो, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका है, तुम इनको दावत पर बुलाओ, इनको अपने दस्तरखान का खिला दो। खाने का बड़ा असर होता है, ख़ास तौर से अगर हराम खाना कोई खाता है और पेट में जाकर हराम ग़िज़ा पहुँचती है तो वो असर करती है बहुत जल्दी। मुतवज्जे रहिएगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं अर्ज़ कर सकता। समझदार तवक्का है, मजमा है, अच्छी तरह समझता है। हराम ग़िज़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सामने वाली फ़ौज से मुखातब होकर क्या कहा था? क़द मुलिअत बुतूनुकुम, तुम्हारे पेट भर गए हैं। किस चीज़ से? हराम ग़िज़ाओं से। ये था समझदार, जानता था कि गुर क्या है, हुनर क्या है, फ़न क्या है, कैसे इनको कंट्रोल में लिया जा सकता है। इनके पेट में ग़िज़ा हराम पहुंचा दो, फिर देखो मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। दावत दी गई, बड़ा एहतमाम किया गया। बहलोल ने तो कबूल ही नहीं किया था, प्रेशर डाला गया, इन्होंने समझा कि चले आएंगे। नहीं है, बहलोल दाना दावत पर तशरीफ़ नहीं लाए। जब दावत पर नहीं आए, बुलवाया गया, नहीं आए, आखिरकार बादशाह ने अपने एक गुलाम से कहा, वो भी तो समझदार है, हुकूमत चला रहा है, जानता है कि कहाँ पे कौन सा फ़न इस्तेमाल होगा। पहले वजीर से मशवरा लिया था, अब काम इस्तेमाल करने के लिए किसको लिया है? गुलाम को। गुलाम से कहा कि ये जो खाना है बहलोल के लिए बना, बहलोल नहीं है, इस खाने को तुम ले जाकर बहलोल तक पहुंचा दो और उनके हवाले कर दो। तय है जब वो ले लेंगे तो बर्बाद नहीं करेंगे। मामला सारा क्या है? ले तो लें, कबूल तो कर लें। गुलाम के हवाले किया कि तुम इस खाने को ले जाकर बहलोल को पहुंचा दो। गुलाम खाना लेता है पैक और लेकर पहुंचता है बहलोल दाना तक, और बहलोल दाना के पास पहुंचने के बाद खाना पेश करता है और बताता है कि वहां से उन्होंने ये भेजा है, ऐसे है। बहलोल दाना का नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसरार किया, नहीं चाहिए। अब देखिए, गुलाम भी ऐसे ही चलता फिरता गुलाम नहीं पकड़ा था, खूब समझदार गुलाम था, पता नहीं कैसे गुलामी में फंस गया था। गुलाम ने कहा, बहलोल जी बात यह है कि आप जानते हैं गुलाम आज़ाद करने का बहुत सवाब है। कहा हाँ यकीनन है। कहा हिशाम ने शर्त लगाई है कि अगर आपने ये खाना कबूल कर लिया तो वो मुझे गुलामी से आज़ाद कर देंगे। कितना सवाब मिलेगा आपको? देख रहे आप कैसे कैसे गुर इस्तेमाल किए जाते हैं फसाद फैलाने के लिए। हराम ग़िज़ा बहलोल के पेट तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जवानों होशियार रहना। हराम ग़िज़ाएं अलग अलग तरह की होती हैं। कभी मालियत के एतबार से हराम होती हैं, कभी उस फूड की हैसियत से हराम होती हैं कि उसके अंदर हिल्लियत नहीं पाई जाती है। अलग अलग नौइयत होती है। खुद को हराम ग़िज़ाओं से बचाओ। हराम ग़िज़ा बहुत जल्द असर करती है। कहा बहलोल जी बात यह है, अब मैं बहलोल जी बोल रहा हूं चूंकि हमारा ताल्लुक जी वालों से है, इसलिए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात यह है कि अगर आपने ये ग़िज़ा कबूल कर ली तो बादशाह ने कहा है कि मैं तुम्हें ग़ुलामी से आज़ाद कर दूंगा, और आपको पता है कि ग़ुलामी से आज़ाद करने का कितना ज़्यादा सवाब है, और आप इस सवाब में शरीक हो जाइएगा, कितना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। बहलोल ने कहा ऐसे ऐसे न जाने कितने टहला करते हैं बेवकूफ़ बनाने वाले। कहा जाओ इसे ले जाकर किसी कुत्ते को दे दो। गुलाम ने कहा ये बात
ये बात आप कह रहे हैं कुत्ते को दे दो, बादशाह की तरफ से ग़िज़ा आई है और आप कह रहे हैं कुत्ते को दे दो। कहने नहीं, जरा आहिस्ता बोलना, कुत्ते को भी पता ना चले कि उसकी तरफ से आया, इसलिए कि वो भी वफादार हुआ करता है। उसको भी ना बताना कि किसने भेजा है, इसलिए कि कुत्ता भी वफादार होता है। वफादार होने का मतलब यह है, वफादारी उसी वक्त हो सकती है जब पेट में हराम माल में न डाला जाए, पेट को हराम माल से बचाया जाए। यह है बहलुल दाना। और इस तरीके से बहलुल दाना को मजबूर किया जाता है कि वो काज़ीउल क़ुज़ात बने। और जब बादशाह वक्त ने देखा कि किसी तरीके से भी दाल नहीं गलने वाली है, कोई भी चारेकार नहीं नजर आया, तब फिर इनके लिए सजाएं और सख्तियां और मसाइल पैदा करना शुरू किए कि बहलुल दाना ने खुद को पागल के लिए, अपने को पागल जाहिर कर दिया कि मैं पागल हूं, और पागलपने की हरकत करके लोगों के सामने पेश करना शुरू किया खुद को, इतना कि लोगों को यकीन हो गया कि ये पागल है। तो मैंने अर्ज किया असल पॉइंट क्या था। असल पॉइंट ये था कि किसी भी जगह पर माहौल बिगाड़ने में, माहौल खराब करने में, गुनाह आम करने में, फसाद फैलाने में एक अहम तरीन किरदार है ग़िज़ाओं का। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी यह है कि अपनी ग़िज़ाओं पर नज़र रखें, अपने खाने पीने पर नज़र रखें। हलाल ग़िज़ा खाएं, थोड़ा खाएं कम खाएं, लेकिन हलाल खाएं। हलाल में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन पाए जाते हैं, बिल्कुल एक अलग टॉपिक है जो इस बात से नहीं है। तज़किरा आया है तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, बहुत सारी जगहों पर लोग धोखा खा जाते हैं। हलाल का मतलब ये है कि मुर्गी का है, चाहे जैसे भी काट ली गई। हराम का मतलब ये है कि मसलन फर्ज़ कीजिए सूअर का है, चाहे जैसे भी काट दिया जाए। पता नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ है, अगर मुनासिब नहीं हो हमारा ये कहना तो आप लोग बेहतर समझिएगा, बताइएगा मुझे। हलाल का मतलब ये नहीं है कि किस जानवर का हो, हलाल का मतलब ये किस जानवर का हो एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या है, किस तरह से उसे ज़बह किया गया है। ये दोनों चीज़ों की शर्त को ख्याल रखिएगा हमेशा। माफ़ कीजिएगा, माज़रत चाहता हूँ, बातें बिल्कुल गैर मुताल्लिक़ हैं, लेकिन ज़िम्न में तज़किरा आता है, लिहाजा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। कोशिश करें मुआशरे साजी में एक अहम तरीन हिस्सा इस बात का है, इसकी तरफ फजतनेबू, अगर तुम्हारे सामने मुश्तबह ग़िज़ा भी आ जाए तो परहेज़ करो। हलालुल बय्यन व हरामुल बय्यन, कुछ वो है जो बिल्कुल हलाल है, क्लियर कट, कुछ वो हैं जो हराम है, बिल्कुल क्लियर कट, और कुछ वो हैं जो मुश्तबह है, बैनल अम्र, कि पता नहीं हलाल है या हराम है। अगर किसी जगह पर हलाल बय्यन है, वाज़ेह है, तो ठीक है, इत्मीनान से फनल मिन हो, उसे इत्मीनान से खा लेना। लेकिन अगर हराम बय्यन है तो मालूम है कि तुम खुद नहीं खाओगे, न खाना उसे। लेकिन अगर मुश्तबह हो तो उससे भी फजतनेबू, परहेज करना। तभी तुम्हारे अंदर इस बात का मलका पैदा होगा कि खुद को गुनाहों से बचाएं और गुनाहों से बचने वाला मुआशरा बनाएं। सलवात भेज दें मोहम्मद। ऐसी न जाने कितनी बातें और कितने ऐसे तज़किरे पाए जाते हैं जो मासूमीन की ज़िंदगी से हट कर हम देखते हैं। मासूमीन की ज़िंदगी में तो जो है सो है ही, उसकी अज़मत से कोई इनकार नहीं है। वो तो मासूम थे, वो तो इमाम थे, वो तो परवरदिगार की जानिब से मंसूस मिनल्लाह थे, लेकिन उनसे हटकर भी हम देखते हैं कि ज़िंदगी, इस मुआशरे की ज़िंदगी में ऐसे सालेह अफराद भी पाए जाते थे जिन्होंने इसार किया है, कुर्बानी की और खूब खुद को बचाया है और बचकर कदम बढ़ाया है। तो उसका नतीजा यही हुआ है। इससे रज़ी और मुर्तज़ा ऐसे ही नहीं पैदा हो गए। सुना है आपने किस्सा, यकीनन बहुत सुना होगा, मैंने सुना। ये दो बाज़मत शख्सियतें थी। किस्सन की बात है, तकरीबन 400 हिजरी की बात है, यानी आज से 1000 से ज़्यादा ही हो गए विलादत को। सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा तकरीबन 400 हिजरी की शख्सियत है।
एक बने तो इतने बड़े अपने ज़माने के आलिम व फ़क़ीह बने कि आज तक उसूल में न जाने कितने ऐसे नज़रियात उन्होंने पेश कर दिए कि कोई उसका टकराव नहीं ले सकता। और एक ने ऐसी इल्मी खिदमत अंजाम दी कि अगर कुरान के बाद कोई किताब घर में नज़र आती है तो नहजुल बलागा। यूं ही नहीं पैदा हो गया। माँ कहती है कि मैंने कभी जिंदगी में दूध नहीं पिलाया मगर ये कि बावजू रही हूं। कहते हैं ना, बच्चों की तरबियत में मेरे उस्ताद मोहतरम अक्सर फरमाया करते थे कि तरबियत का काम पैदा होने के बाद से नहीं शुरू होता है, पैदा होने से पहले से शुरू हो जाता है। ये जो हम सोचा करते हैं कि ये बच्चे सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ये खूब समझ रहे हैं, इत्मीनान से पूरा कैमरा चल रहा है, वीडियो इनके जहन में सब महफूज है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों की तरबियत में क्या रोल अदा करें, कैसे काम करें कि इनके ऊपर गलत असरात कायम ना हो। दर्स हो रहा है, सैयद रजी और सैयद मुर्तज़ा के उस्ताद दर्स दे रहे हैं। दर्स के दरमियान कहते हैं कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस बात का वादा कर सकता है कि जिंदगी में कभी कोई हराम करेंगे नहीं, वाजिब छोड़ेंगे नहीं। मुश्किल काम है, आसान। देखिए, मुस्तहब उस्ताहब की बात नहीं हो रही, बात मुस्तहब की नहीं है, बात काहे की हो रही है? हराम किसे कहते हैं? अल्लाह की तरफ से आए हुए हुक्म 5 तरह के हैं। कितने हैं? 5 हैं। अहकाम खमसा, हराम वाजिब, हराम वाजिब, मुस्तहब मकरूह, और एक बीच में जिसका नाम है मुबाह। मुबाह हराम किसे कहते हैं? जिसका करना गुनाह है, नहीं करने में क्या? जिसका करना गुनाह है, नहीं करने में क्या? बोलिए आगे, जोर से बोलिए। ये बताइए, दुनिया में कहीं ड्यूटी पूरी करने के ऊपर सवाब मिलता है? मैंने जिंदगी भर ड्राइविंग करने में सही साइड से गाड़ी चलाई, मुझे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, कहीं होता है ऐसा? कहीं होता है ऐसा? हमने जिंदगी में पूरी जिंदगी कभी भी बगैर टिकट के ट्रेन पे सफर नहीं किया, लिहाजा हमको इनाम मिलना चाहिए। कोई इनाम मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा ना। ड्यूटी पूरी करने पर कहीं सवाब नहीं मिलता। ये करीम परवरदिगार का निजाम है, कहता है कि अगर ड्यूटी पूरी करोगे तब भी सवाब देंगे। कहता वाजिब उसे कहते हैं करोगे तो सवाब है, नहीं करोगे तो अजाब है। वाजिब वो है करोगे तो सवाब है, नहीं करोगे तो अजाब है। यानी नहीं करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो गुनाह है, ठीक, लेकिन करने के ऊपर भी सवाब मिलेगा, वो भी अवार्ड मिलेगा, वो भी एक किस्म का बोनस रख दिया गया, वो भी एक सवाब रख दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो, ये हमारा निज़ाम है कि हमारे यहाँ ड्यूटी पर पूरी करने के ऊपर कोई अजर व सवाब नहीं मिलता है। अल्लाह के यहाँ कोई अजर व सवाब देने में, ख़जाने में कमी नहीं है कि वो अगर कुछ दे देगा तो उसके यहाँ कमी हो जाएगी, फिर अगले को कैसे देगा। लिहाजा उसने कहा ड्यूटी पूरी करोगे तो भी सवाब मिलेगा और नहीं करोगे तब अजाब होगा। और इधर हराम के लिए कहा नहीं करोगे तो सवाब मिलेगा, ये ना समझो कि सवाब नहीं मिलेगा, और करोगे तो अजाब होगा। मकरूह किसे कहते हैं? मकरूह किसे कहते हैं? मकरूह उसे कहते हैं जिसके करने में सवाब, सही कह रहा हूं गलत? देखो मजमा हाजिर है, नहीं जो हजरात हाजिर नहीं है वो एक मरतबा सलवात भेजें। अरे खुदा, बाकी हिसाब किताब पूरा क्लियर है, सलवात भेजे बस मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ी देर मेरी बात के ऊपर तवज्जो दे, गौर के, मैं आपकी तरफ मुखातिब हूँ। बहरहाल आपने वक्त निकाला है, तशरीफ लाए हैं। एक एक मजलिस 5-5 घंटे 6-6 घंटे एक आदमी का लेती है। गलत नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरा बयान 50 मिनट का हो तो हो, वरना 5 घंटे से कम तो आप नहीं खर्च करते एक मजलिस के ऊपर, इंतजामात से लेकर के आखिर तक के। ज़्यादा ही खर्च करते हैं, उससे कम नहीं खर्च करते हैं। ये थोड़ी सी बातें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, शायद ज़िंदगी में याद रह गई आपको तो काम आएगी, और शायद मेरे लिए नजात का जरिया बन जाए। हो सकता है ज़्यादा रूखी बात हो, इसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। एक मरतबा और सलावत भेजने पर मोहम्मद। और बहरहाल उस रूखा होने के लिए तलाश कीजिएगा जिसने बुलाया था। फिलहाल मामला हमारा आपका सिर्फ अपनी बातें डिलीवर करना है, पहुंचाना है, आपको उसे सुन लेना है और उसके ऊपर कोशिश करना है कि देखा जाए बात वाकईन सही है या नहीं। वाजिब वो है जिसके करने पर सवाब है, ड्यूटी है, कीजिएगा तब भी सवाब मिलेगा, नहीं कीजिएगा तो गुनाह मिलेगा। हराम वो है जिसके नहीं करने पर भी सवाब है, कीजिएगा तो अजाब होगा। मकरूह वो है कि जिसके करने पर कुछ नहीं है, नहीं करने पर सवाब है।
और मुस्तहब वो है जिसके करने पर सवाब है, नहीं करने पर, और मुबाह वो है जो कीजिए या न कीजिए बराबर है। एक बार छोटी सी मिसाल के साथ 5 चीज़ें आपके सामने पेश कर दूं। वाजिब जैसे नमाज पंजगाना है, वाजिब जैसे इताअत वालिदैन है, वाजिब जैसे फ़राइज़ की अंजामदेही है, वाजिब जैसे हज का पूरा करना है, वाजिब जैसे रोज़े का रखना है, हराम जैसे बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल है जो आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल करना, बहुत सारे काम हैं जिसको हराम करार दिया गया है। नामहरमों को देखना हराम है, जुल्म के लिए हाथ उठाना हराम है, नामहरमों पर निगाहें उठाना हराम है, वगैरह वगैरह। मुस्तहब जैसे नवाफिल का पढ़ना मुस्तहब है, सवाब है, पढ़िएगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़िएगा तो कुछ भी नहीं, कोई पूछा नहीं जाएगा आपसे। मकरूह वो चीज़ है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ आ गई है और अगर मकरूह है उसे आप कीजिएगा तो कोई गुनाह नहीं है, नहीं कीजिएगा तो सवाब मिलेगा। मसलन कलेजी अगर आप खाइएगा तो आपको कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं खाइएगा, सामने आ गई थी तो आपको सवाब मिलेगा। ये जमे हुए खून की जितनी भी चीज़ें डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं, वरना तो गोश्त भी वही होता होगा, समझ रहे हैं? तो और मुबाह वो है जो एक दरमियानी चीज़ है, आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है, यहाँ के बजाय यहाँ बैठ जाइए, वहाँ के अगर कोई खुसूसी वजह न हो, ये है मुबाह। ये यहाँ बैठिएगा तो वहाँ बैठिएगा तो बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माइक लगाने में ये वाला हम यहाँ लगा लें, इधर लगा दें या इधर लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह है अहकाम खमसा। सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा दर्स में तशरीफ़ फरमा है। उस्ताद ने पूछा, कौन? वही वाले उस्ताद हैं जिन्होंने ख्वाब में देखा था सिद्दीक़ा ताहरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ़ लाई। ये वो जवाहिर हैं, वो अहम शख्सियतें हैं, ये वो अजीम बालातर मंजिलत रखने वाली, रफ़ी मंजिलत रखने वाली शख्सियतें हैं जिनको हम थोड़ा इनकी ज़िंदगी का मुताला कर लें तो शायद मासूमीन को समझना आसान हो जाए। ये दोनों तशरीफ़ फरमा है। दर्स में उस्ताद ने सवाल किया कि तुम लोगों में से कौन ऐसा है, तमाम शागिर्दों से, सैकड़ों का मजमा है, तुम में से कौन ऐसा है जो इस बात का वादा करता है, या अल्फाज बदल कर कहूँ कि कौन ऐसा है जो इस बात का अहद करता है कि ज़िंदगी में कभी हराम करेंगे नहीं, वाजिब छोड़ेंगे नहीं? हम में से कोई है ऐसा? सिर्फ छोटा सा वादा है। दावे तो सब यही कहते हैं कि हमने हराम किया नहीं, वाजिब छोड़ा नहीं। वाक़अन रियल में, सच में ऐसा वादा जो पक्का वादा हो, हराम करेंगे नहीं और वाजिब छोड़ेंगे नहीं। जितना मजमा बैठा हुआ था, सामने बैठने वाले सब दर से खारिज में शरीक होने वाले बड़े बड़े उलमा थे, सब खामोश बैठे रहे। यही 2 बच्चे थे जिन्होंने खड़े होकर कहा कि उस्ताद मोहतरम, सिर्फ वाजिब और हराम की बात नहीं, मैं वादा करता हूँ कि किसी मुस्तहब को छोड़ूंगा नहीं, किसी मकरूह को अंजाम नहीं दूंगा। ये उस वक्त से तरबियत हुई थी, तब से तरबियत हुई थी तो इस मंजिल पर पहुंचे, और इस मंजिल पर पहुंचे तो एक रज़ी बन गए और एक मुर्तज़ा बन गए। ये तो वो है जो वाक़यात हमने पढ़े हैं। लिहाजा आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि माँ ने कभी दूध नहीं पिलाया मगर वो वज़ू कर लिया हो। इससे पहले जितने भी इंसान के दौर गुजरते हैं, वो तमाम दौर में कौन सा मुहतात तरीन तरीक़ा वालिदैन ने अपनाया था, जिसके नतीजे में ऐसे बच्चे मुआशरे में सामने आए। हमें भी अपने माशरे में ऐसे ही बच्चे बना करके देना है। ये कहना कि हमारे बस की बात नहीं है, कैसे बस की बात नहीं है? बस की बात है। किसी के, अगर हमने किसी मासूम इमाम का वाक़या सुनाया होता तो आप कहते कि किसी मासूम इमाम का तो वाक़या नहीं है, एक आम इंसान है, ये भी आम इंसान की आम फैमिली। कहीं नहीं मिलता कि सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा के अब्बा मौलाना थे। ये भी नहीं मिलता कि मौलाना नहीं थे, लेकिन ये भी नहीं मिलता कि मौलाना थे। जो कुछ थे वो सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा थे, उनकी अज़मत थी। लेकिन बाप इतना मोहतात था, माँ इतनी मोहतात थी कि बच्चों को दर्जा दिया गया हसनैन वाला। ये मामूली बात। शेख इन दोनों बच्चों को पढ़ा दो। सिद्दीक़ा ताहरा अपने हाथ में दोनों बच्चों के हाथ थाम कर लेकर के आई हैं, कहती है शेख इन दोनों बच्चों को पढ़ा दो, ये मेरे बच्चे हैं हसन और हुसैन। नींद टूटती है, बेचैन हो जाते हैं। मैं नहीं कह सकता, इससे आगे परवरदिगार
ये वाक़यात हमारी किरदार साजी का ज़रिया बना दे। ये कोई बनावटी वाक़यात नहीं है, ये वो हकीकी वाक़यात है जिसे तारीख़ में लिखा गया। ये वो सच्चे दीन के मुहाफ़िज़ थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं और इस तरह से अपने किरदार से नस्लों को तैयार किया है। जिन बच्चों को हसन और हुसैन से ताबीर किया जाए और नींद टूटती है तो देखते हैं कि माँ दोनों बच्चों को लेकर के चली आती है और वही जुमले हैं, शेख इन दोनों सादात को, इन दोनों बच्चों को तुम पढ़ा दो। एक रजीफ हो रही, हम क्या अर्ज करें आपसे। वाक़ईन हम जब गहराई में जाकर मताला करते हैं, हम अपनी औकात को पहचान लेते हैं, अंदाज़ा हो जाता है मैं कुछ भी नहीं हूँ वाक़ईन उसके मुकाबले, मेरी कोई हैसियत नहीं। ऐसे ऐसे किरदार, ऐसे ऐसे कैरेक्टर समझ कहा गया है कि आज फर्जंदान ज़ैनब और मोहम्मद का तज़किरा किया जाए। ये उस माँ ने दोनों बच्चों को तरबियत करके रज़ी और मुर्तज़ा बनाया था। करबला में हमने देखा माँ ने तरबियत दे करके ओनो मोहम्मद तैयार किया था। कैसे बच्चे बासलाबत, खूब अच्छी तरह से हालात को तर्क करने वाले, फर्जंदान जाफर तैयार, ज़ैनब के फर्जंद, ज़ैनब के बच्चे। माँ ने बच्चों को भाई के लिए फिदा कर दिया है, तैयार किया है। कब से ज़ख़ीरा किया है ज़ैनब जानती है। जिसके आगोश के पले हुए दो बच्चे हों, वो माँ अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि इसकी कुर्बानियां देखनी हो, इसकी शहादत देखना पड़े, इसके कटे हुए सर देखना पड़ेंगे, इसका पामाल जनाजा देखना पड़ेगा, मगर उन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखने के बावजूद ज़ैनब मकसद को हासिल करना चाहती है, हदफ तक पहुंचना चाहती है। तारीख लिखती है जब शब आशूर आई है, इन दोनों बच्चों को कहते हैं एक बेटे को जनाब ज़ैनब, बहुत इस वक्त बात अचानक मेरे जहन में आई है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैंने किताब में पढ़ा है बज़ाहिर कि एक बेटे को जनाब ज़ैनब लेकर आई थी मक्के तक, दूसरे बेटे को जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र ने पहुंचाया। किस तरह से पहुंचाया? दोबारा दोनों बेटे को लेकर ज़ैनब सरज़मीन करबला पर वारिद होती है। नसीहत है कि मेरे लाल कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अली अकबर तुमसे सबक़त लेकर चले जाएं, और न मोहम्मद कहीं ऐसा ना हो हुसैन के बच्चों में से कोई तुमसे सबक़त लेकर चला जाए, और न मोहम्मद मामू पर पहले तुम्हें पैदा होना है। कहते जब शब आशूर आई है और जनाब ज़ैनब ने अपने बच्चों को हुजरे में बुलाया है, तारीख़ लिखती है कि रात बड़ी दर्दनाक रात थी, खेमों से तस्बीह व तहलील की आवाज़ बुलंद थी, और इस तरह से तस्बीह व तहलील की आवाज़ बुलंद थी जैसे मक्की के शहद की मक्खी के छत्ते से आवाज़ें बुलंद हुआ करती हैं, और हर तरफ से गिड़गिड़ाने की आवाज़ थी। कोई मौत से डर कर रो नहीं रहा था, बल्कि अपने मालिक से राज़ो नियाज़ कर रहा था। बीवियां अपने अपने खेमों में बैठकर अपने जवानों को समझा रही थी, तैयार कर रही थी, आरास्ता कर रही थी। किसी जगह कहा जा रहा था मेरे लाल कल हुसैन पर कुर्बानी देने में कोई
कमी नहीं होना चाहिए। असहाब के खेमे में भी हुसैन ने जाकर के मुताला किया है, जाकर के नज़दीक से देखा, माएँ अपने बच्चों के आगोश में, बच्चों को अपने आगोश में लेकर बालों को सुलझा रही हैं और कहती हैं, बेटा कहीं ऐसा ना हो कल हुसैन पर मुसीबत का वक्त आए तो तुम मदद न करना। हर तरफ खेमे में औरतें अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं कल के वास्ते, ताकि कल जब हुसैन पर वक्त आए तो कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन तन्हा रह जाए और हमारे बच्चे उनके ऊपर फिदा ना हो। ज़ैनब भी अपने खेमे में बैठकर अपने दोनों बच्चों को अरे उनके दादा और बाबा के रज सुना रही थी। ए ओनो मोहम्मद, अरे तुम जाफर के पोते हो, ओनो मोहम्मद तुम अली मुर्तजा के नवासे हो, ए ओनो मोहम्मद तुम अब्दुल्लाह के बेटे हो, ए ओनो मोहम्मद कहीं ऐसा ना हो कल मामू पर वक्त आ जाए और तुम आगे न बढ़ो। ए ओनो मोहम्मद हुसैन की मदद करने में कोई गुरेज न करना। रात भर बीवियां अपने बच्चों को बुजुर्गों के रज सुनाती रही। ज़ैनब ने भी बैठकर ओनो मोहम्मद को जाफर तैयार के फजाइल व कमालात सुनाए, अब्दुल्लाह के वास्ते देकर बच्चों को तैयार किया। और यकीनन ये बच्चे पहले से तैयार हैं। ज़ैनब चाहती हैं कि इनके जज्बात, इनके एहसासात को और वाज़ेह कर दिया जाए और कह दिया जाए कल हुसैन पर अगर वक्त आए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम जिंदा रहो और मेरे भाई पर मुसीबत आ जाए। ऐ ओनो मोहम्मद कहीं ऐसा ना हो कि अली अकबर तुमसे पहले शहीद हो जाए। रात गुजरती है, सुबह होती है, असहाब का इम्तिहान होता है। असहाब तलवारें लेकर, खुली हुई तलवारें लेकर ज़ैनब के दरवाजे पर आ जाते हैं। उधर उनका नारा है कहीं ऐसा न हो कि बनी हाशिम से कोई पहले मार दिया जाए और हम जिंदा रह जाए। मौत का बाजार गर्म होता है और मौत का बाजार गर्म होने के बाद सिलसिला शुरू होता है मैदान में जाकर शहीद होने का। और हुसैन है जो जनाजे उठाकर ला रहे हैं, लाके गंजे शहीदा में जनाजे को जमा कर रहे हैं। एक वक्त वो भी आया जब इन दोनों बच्चों ने मामू से इजाजत मांगी। हुसैन ने बमुश्किल इन बच्चों को इजाजत दी और इजाजत देने के बाद ये दोनों बच्चे मैदान कारज़ार में जाते हैं। और जाने के बाद तारीख लिखती है दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और दुश्मन की फौज पर ये अलगार करते चले जाते हैं। दुश्मन की फौज है जो काई की तरह फटती चली जाती, मजमा है जो पीछे की तरफ खिसकता चला जाता और ओनो मोहम्मद बढ़ते चले जाते। मगर एक वो वक्त भी आता है कि इन दोनों बच्चों पर वार हुआ। अरे घोड़े पर संभल न सके, आवाज दी, अरे मेरी मदद को पहुंचो। हुसैन ने ओनो मोहम्मद की आवाज सुनी। अरे यकीनन हुसैन ओनो मोहम्मद तक पहुंचे होंगे। पहुंचकर जनाजे उठाए, अरे लेकर गंजे शहीदा में आए। गंजे शहीदा पे लाकर ओनो मोहम्मद के जनाजे रख दिए। मां ने आकर दोनों जनाजों के दरमियान जगह बनाई, सर सजदे खालिक में रख दिया। ए मेरे मालिक, अरे मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। ए मेरे मालिक, अरे मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। तारीख लिखती है ज़ैनब ने मालिक का शुक्र तो अदा किया लेकिन बच्चों का गिरिया नहीं किया। अरे इसी मंजिल पर नहीं, कहते हैं इसके बाद ये ओनो मोहम्मद के सर को तन से जुदा कर दिया गया, नेज़े पर बुलंद किया गया। मां ने दुखड़ा नहीं किया, मां ने गिरिया नहीं किया। इन ओनो मोहम्मद के सर को साथ में लेकर चले, लेकिन बहन भाई का मातम करती रही। कहते हैं और आगे बढ़ा। अरे तारीख यहां तक लिखती है एक वो भी मंजिल आई जब कैद खाने शाम में आजादी मिलने के बाद इन दोनों बच्चों के आए सर लाए गए। ज़ैनब ने बढ़कर बच्चों के सर का इस्तेमाल नहीं किया। किसी बीवी ने कहा लगता है इसकी माँ
जिंदा नहीं। अरे खुशनसीब थी माँ कि पहले चली गई, वरना इस नौनिहाल बच्चों को न देख पाती। उधर से ज़ैनब ने कहा, बीबी क्या कहती है? अरे इसकी दुखियारी माँ, ज़ैनब जिंदा है लेकिन मेरे भाई का गम। अजरकुम अल्लाह, खुदा न रुलाए सिवाय गम सय्यदुल शुहदा। कहते हैं ज़ैनब भाई का मातमदार है, ज़ैनब भाई की गमगुसार है, ज़ैनब औनो मोहम्मद को भाई पर फिदा कर चुकी है, अब बच्चों का मातम नहीं करती। लेकिन यहाँ तक कि एक वो वक्त भी आया जब ज़ैनब सरजमीन मदीना पर वापस आई। अब्दुल्ला इब्न जाफर घर तशरीफ लाए, पहचान न सके, बाल सफेद हो चुके। अरे जब ज़ैनब को पहचाना, कहा बीबी, अरे घर तशरीफ ले चले, शौहर का हुक्म पाया। अरे अपने घर की जानिब अब जो ज़ैनब गई और हुजरे में पहुंचकर दोनों बच्चों के बिस्तर देखे, ममता तड़प गई। ए मेरे नो मोहम्मद, मेरे लाल कहाँ हो? तेरी दुखियारी माँ तुझे मातम हुसैन।